Dear students, in this module, we shall discuss the structural features of neuron. A neuron has three basic components. The first is a cell body, which is also known as soma. The second component is the dendrites, and the third component of a neuron is the axon. We shall discuss these parts in detail. The cell body or soma varies in size and shape in different neurons. It may be fusiform or stellate or oval and may be rounded in some neurons. Some neurons also have pyramidal shaped cell bodies. The size range of cell body is from 5 micrometer in small neurons up to 135 micrometers in larger neurons. The cell body is the main nutritional part of the nerve cell. It is responsible for the synthesis of materials which are necessary for the growth and maintenance of metabolic functions of the nerve cell. The cell body or soma has a almost typical eukaryotic cell-like structure. It has a nucleus. It contains all the cell organelles. In addition to these, there are some specific structures which are called Nissel's granules and neurofibrils in a cell body. The Nissel's bodies are a group of ribosomes and endoplasmic reticulum which are involved in the synthesis of proteins. The neurofibrils are delicate threads which run from the cell body to the axons and to the dendrites. न्यूरोफाइब्रिल्स का काम ये है कि ये सेल बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ये सेल बॉडी से सब्सटेंसेस को दोनों एक्सट्रीमिटीज यानी डेंड्राइट्स और एक्सोन के एंड्स तक ट्रांसपोर्ट भी करती हैं. डियर स्टूडेंट्स, द डेंड्राइट्स आर शॉर्ट, थिन and branched cytoplasmic processes. They extend from the cell body and receive signals from other neurons, and after receiving these signals, they send these signals to the cell body. Dendrite का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड डेंड्रोन से निकला है जिसका मतलब ट्री होता है. चूंकि ये डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं इसलिए इनको ये नाम दिया गया है. हाईली ब्रांच्ड डेंड्रिटिक ट्री वाले नर्व सेल्स की एक एग्जाम्पल ब्रेन में मौजूद सेरिबेलम के पुर्किंजी सेल्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस द एक्सोनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. द एक्सोन्स आर लॉन्ग and thin processes that extend from the cell body. They have a constant diameter. Axons की lengths vary करती हैं. Smaller neurons में axon सिर्फ few millimeters लंबे होते हैं, जबकि बाज लंबे neurons में axons की length 1 मीटर या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं. The axons are specialized to conduct signals away from the cell body. They carry information for long distances with high fidelity and without loss. ये पूरी ईमानदारी के साथ जो मैसेज रिसीव होता है
उसे सेल बॉडी से एक्सोन टर्मिनल्स तक और इवन अगले न्यूरॉन्स तक बगैर किसी कमी बेशी के पहुंचा देते हैं। The structure of axon has a cytoplasm-like material in it that is jelly-like semi-fluid and is known as exoplasm. Similarly, the plasma membrane of the axon is known as axolemma. Axons also have mitochondria and endoplasmic reticulum, but they lack Nissal's bodies. Dear students, the axons end at branched terminals. These terminals have small extensions which are called telodendria. ये जो टीलोडेंड्रिया हैं, इनके ऊपर फिर नॉब लाइक गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल नॉब्स कहते हैं। टर्मिनल नॉब्स आर दी प्लेसेस फ्रॉम वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। Axon terminals allow the transmission of signals to other neurons or to the glands or to the muscle fibers to which the neuron is attached. Now we shall discuss another part of the neuron, that is the axon haylock. Axon haylock is present at the junction of cell body and axon. It is a conical shaped region. It is the place where action potentials and signals are generated जो कि फिर पूरे एक्सोन में ट्रेवल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एक्सोन्स के ऊपर एक फैटी मटेरियल की लेयर भी मौजूद होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। आमतौर के ऊपर माइलिन शीथ को श्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि इट हैज स्मॉल नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स विच आर कॉल्ड nodes of Ranvier. Due to these nodes of Ranvier, nerve impulse moves in a jumping pattern from one node to the other. Such conduction of impulse is called saltatory conduction. Such impulses are called saltatory impulses. This pattern found in myelinated neurons increases the speed of nerve impulse.